Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to do the question answers of some great Muslim women. That is unit number 18 of your book. Take out your copies, write classwork, date and day on top of the page, and then write answer the following question. The first question is, who was Bibi Aisha? Bibi Aisha kaun thi? You can write the answers from book. As you people can see, I am marking the questions, answer of the questions out from the book just for your sake. ठीक है, इस तरह इजी हो जाता है कि आपको आपकी गलती की गुंजाइश कम कम रहेगी. ठीक है, अगर आप लोग बुक से आंसर लिखेंगे तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू एंड दैट विल बी ऑफ लेस मिस्टेक्स. ठीक है, तो आप लोग जिस तरह मैं आपको निशान लगाती जा रही हूँ, आप उस तरीके से वन बाय वन आंसर साथ साथ लिखते जाएं, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी. बट आई विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू विद द पिक्चर्स, सो एनी वन हु विल बी फीलिंग डिफ़िकल्टी इन फ्रॉम राइटिंग फ्रॉम द वीडियोज़ कैन go through the images. So the first question was, who was Bibi Aisha? The answer is written over here. Bibi Aisha was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, the closest friend of Holy Prophet, peace be upon him. So Hazrat Aisha जो थी वो कौन थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी. Okay, question number 2. Why did the people comes to Bibi Aisha? कि लोग हज़रत आयशा के पास क्यों आते थे? So when the Holy Prophet, peace be upon him, died, people began coming to her in order to learn the teachings of Holy Prophet, peace be upon him. ठीक है, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, people began coming to her in order to learn the teaching, but it would be more good if you'll write from here कि हज़रत मोहम्मद की वफ़ात के बाद लोग उनके पास आना शुरू हुए थे. ठीक है. The third question is, who was Bibi Fatima? Bibi Fatima kaun thi? So Bibi Fatima was the youngest daughter of Holy Prophet, peace be upon him. Her mother was Bibi Khadija. You can write till here, lekin if you want, you just want to write the answer shortly, so you can just write Bibi Fatima was the youngest daughter of Holy Prophet, peace be upon him. That is all. Question number 4. What did the Holy Prophet, peace be upon him, tell Bibi Fatima before dying? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत बीबी फ़ातिमा को क्या कहा था? So the answer is written over here. When the Holy Prophet, peace be upon him, was about to die, he told Bibi Fatima that she would be the first one from his family to meet him in the paradise. कि वो उनकी फैमिली में से वो सबसे पहली होंगी जो उनको जन्नत में मिलेंगी. The question number 5 is, who was Rabia Basri? Rabia Basri kaun thi? So Rabia Basri, you can write there are, okay, you can make out the answer yourself. ठीक है, starting from it, Rabia Basri was a pious woman. She lived more than, just write Rabia Basri was a pious woman. In her early life, Rabia Basri was sold as a girl slave. ठीक है. ठीक है, and then you can write from here, she spent most of her life in the city of Basra. She became famous for her pity and wisdom. You can write this answer by yourself. ठीक है, it will be more, I will be more happier if you will, I will like if you'll write the answer yourself. ठीक है, try to write something that is creative. So आप इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हैं. So try your best to write the answer yourself. What did Rabia Basri reply when the master asked her why she prayed during the night? जब राबिया बसरी से उनके मास्टर ने कहा कि वो रात को इबादत क्यों करती हैं, तो राबिया बसरी ने क्या जवाब दिया? And the answer was, आप लिख सकें, यहाँ से लिखेंगे, शी की जगह आप क्या लिखेंगे? हज़रत राबिया बसरी replied,
If I can work for you all day when you are just a human being, how could I refuse to do the work of God at night, who is my real master? ठीक है, यहाँ तक आप इसका आंसर जो है लिखेंगे। और इस बात का मतलब क्या था? इस बात में यही था कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हारे एक इंसान होते हुए सिर्फ अगर तुम्हारे लिए पूरा दिन काम कर सकती हूँ, तो मैं उस खुदा के लिए क्यों काम नहीं कर सकती, उस खुदा की इबादत क्यों नहीं कर सकती जो कि सब जहानों का मास्टर यानी कि खालिक है, मालिक है। ठीक है, सो these are 6 questions. You have to write the answers neatly on your copies. And also I just want to mention it, as you people know that we will inshallah be continuing our classes from 1st of February. ठीक है, 1st February से आप लोग inshallah सब school आएंगे, and all the homework and all the classwork that I have already mentioned in the in the online classes, मैं इस चीज़ को ना रिपीट भी नहीं करूँगी। ऑब्वियसली आई विल नॉट बी रिपीटिंग दैट इन योर क्लासेस, क्योंकि हम वहाँ पे आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, so make sure everyone, this is for everyone, do tell your friends also that complete your copy work and all the book work also। ठीक है, ब्लैंक्स आपकी यहाँ तक जितने भी चैप्टर्स हो जाएंगे वहाँ तक की ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, these all things should be on your copies as well। okay, so that is all for today. By tomorrow inshallah we will start our unit number 19। okay, Allah Hafiz।